Pakistan keep their unbeaten record going in this World T20 in the UAE, and it means there are smiles all round in the Game on Hay studio tonight, yet again, so we can have a peaceful, quiet, sensible discussion about what was a fabulous game of cricket in the second part of the day, following on from actually another very close game earlier in the day as well. So welcome to the show. Just introduce our team yet again. It's still intact. Sanamir is here alongside me, Akib Javed, Sir Viv, Azam Mahmood, Rashid Latif and Umar Gul, and everyone, as I say, is smiling. So let's go that side of the room first and discuss it in the home language. राशिद भाई, आसिफ अली के बारे में आपने एक प्रेडिक्शन की थी। जी जी, एक आप और एक मदर अरशद जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है, आप लोगों की बड़ी लगता है पाकिस्तान में दो ही लोग क्रिकेट समझते हैं। हमारे टाइम पे भी था, मतलब हम वापस चले गए। हमारे टाइम पे भी था। नहीं, बहुत खुशी हुई पाकिस्तान में दो क्रिकेटिंग जो है ना, इनके पास तोते अच्छे नहीं, खुशी हुई देख के आसिफ को। और ये जो सिचुएशन है ना, शूट करती है इसको दुबई यूएई की जो है ना, बहुत ही, और जो खतरा था, जो मैं ख्याल था नबी थोड़ा मिस कैलकुलेट कर गए। स्पिनर अगर इनके पास होता शायद थोड़ा सा चेंज होता। ये यहाँ पे डीप आके और उसके बाद जो हिटिंग करते हैं 99% इनकी बाहर जाती है। मुबारक हो बाबर आजम को, पाकिस्तान पूरी टीम को और मैनेजमेंट को कि तीसरी लगातार जीत हुई है पाकिस्तान की। अजहर भाई, आपने जैसे कहा कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करना चाहेगा, हाँ जो ये आपकी प्रेडिक्शन थी और हमने वही देखा, इवन दो कि ड्यू का फैक्टर आ सकता था पर उन्होंने वही किया। नहीं, प्रेडिक्शन नहीं थी, मुझे यकीन था, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो है ना, वो बॉलिंग पे, अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उनको ये पता है कि अगर हम 130 भी करेंगे तो वो गेम में है। आज जिस तरह बाबर आजम खेले, डेफिनेटली उनकी क्लास इनिंग्स थी, उसके साथ बीच में सबने चिप इन किया, फ़खर के साथ उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे, जैसे राशिद भाई ने कहा, मिस कैलकुलेट किया है कि राशिद खान को बहुत लेट लेके आए बॉलिंग करने के लिए, और एक जो वीक लिंक था, जो जन्नत जो था, वो वीक लिंक था। और जिस तरह की आसिफ अली ने हिटिंग की है, इसलिए हम हमेशा उसको बैक करते हैं कि उसमें इतनी एबिलिटी और स्किल है कि वो गेम को चेंज कर सकता है। हमने पिछले मैच में भी देखा, उन्होंने उस मैच में भी 2 छक्के मार के जो है ना गेम चेंज कर दी थी, और आज भी हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग की है। तो आई थिंक कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हम लोग जब हमने बॉलिंग भी की तो आई थिंक कि 17 ओवर तक जो है ना हमने कंट्रोल किया। जिस तरह अब हमारे बॉलरों ने स्टार्ट किया, 17 ओवर तक जो है ना हम गेम को कंट्रोल कर रहे थे। 2 ओवर बीच में ऐसे लगे जहाँ से थोड़ा सा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैच उनकी फेवर में चला गया है, लेकिन जब हमारे बैट्समैन वापस आए और जिस तरह बाबर ने अपनी इनिंग्स खेली, आई थिंक सबको बहुत बहुत मुबारक। एक राशिद खान के बारे में एक और भी चीज़ जो मैंने समझी थी, उमर आपसे भी पूछूंगी, जो उनके इंटरव्यूज से साबित हुआ कि वो जब ड्यू पड़ती है वो कहते हैं मैं और भी अच्छी बॉलिंग करता हूँ। क्या इस तरह का जो स्पिनर होता है, जब वर्ल्ड क्लास होता है, क्या उसके इर्द गिर्द पूरी टीम की स्ट्रैटेजी बन सकती है, और क्या वहीं पे थोड़ा सा फॉल्ट, और उसी वजह से क्या पता उनको थोड़ा लेट लेके आए हैं? क्योंकि उनके बारे में ये बात मैंने सुनी है, उनके खुद PSL में भी हम जब इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे थे कि वो कहते हैं मैं ड्यू में और भी बेहतर बॉलिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मुबारक, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीते। बिल्कुल डेफिनेटली उसको जो कॉन्फिडेंस है, और अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान 3 बॉलर्स पे रिलाई कर रहा था, मुजीब पे और नबी और राशिद, ये तीनों ऐसे ना कि इन्होंने मेन टॉस जीत के फिर जब आप बोर्ड पर रन डालते हो, और फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारी बॉलिंग में कैपेबिलिटी है और उनकी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग है, तो मेरे ख्याल से उनकी वो एक प्लान के तहत वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी राशिद को इंट्रोड्यूस करते तो मैं भी लेटर ऑन के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जो रिस्ट्रिक्ट कर सके। लेकिन मेरे ख्याल से प्रीपेयर कर रहे थे, जिस तरह मुजीब ने स्टार्ट किया है, उसके साथ नबी आया, फिर अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराई और राशिद को रखा है 10 ओवर के बाद। तो मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटजी और इसी हिसाब से वो लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। There's a mixed discussion about whether Rashid came into attack a bit later, or could they have held a bit of overs for the spinners at the end. So there's that discussion, but yes, of course, everyone is really happy the way Asif Ali played, the way Babar Azam led the team. So overall consensus is that it's a very good win. It certainly is. Okay, if we just have a quick look at the match summary, just to remind you all the basic figures, the most important figures. A great partnership between Gulbuddin and Nabi of 71 gave Afghanistan that impetus towards the end of their innings. Generally good figures for Pakistan bowlers. There's top three there.
all in the 20s. Ralph and Hassan Ali a little bit expensive, but the target then 148. Babar Azam again very steady with that 51, just keeping things together. Obviously the star of the show at the end, Asif Ali, 25 not out from just 7 deliveries. So work it out. That is 4 scoring shots, which are all sixes, just a token single, and that was it. Job done. All the tension taken away. Pakistan keeping their record intact. Viv, I mean, it's echoes. I know it wasn't the last over of the game as such, but we got rid of that. There's echoes of Carlos Brathwaite. Remember the name. Well, it wasn't the final, really, but... No, but it's still... Don't worry. Don't worry. They can do it again. No, it's not the final, but it's still 4-6. But it's leading up to that, you know. I think it was a good game for Pakistan today because of they've been tested. And this is what you need when you're going forward. You cannot afford to have easy matches all the time. You can actually say that it was pretty easy against India. They were tested in the very second match. Tonight, they were even tested even more, and they came through. You need these sort of tough goings at times in order for you to pull through. And certainly, Asif Ali, what he did, we didn't get 6 sixes in the over of such, but when you can do that, take whoever is at that particular end bowling, and you can take whoever down. 4 sixes in any over, in whatever style of cricket you're playing, it's just a magnificent feat. And to bring Pakistan home, what a better way. Couldn't be a better way. Well, no, it was a spectacular finish, spectacular. Just going back to the question they were posing on the other side of the room about the spin, about Rashid Khan. I mean, I have a feeling that they had to get him in because they want to try and pile the pressure on to the end of the game. And you bowl your best bowlers first to try and get people out, which by and large works, not quite as spectacularly as it did against Scotland. But then you always have the potential for the weak link they mentioned. And you know, poor old Janat, Karim Janat was the man who suffered in that 19th over. You know why they keep bringing Rashid after 10 overs? Because when you bring him early, the batsman waste is over. He comes in a situation where at the same time you need 7, 8 and over. You're still trying to look for runs where Rashid become a very difficult bowler. The 3 bowlers prove again and again that they are the best in the business. It was a quite tense game going on until the 19th over. And that is what we have always been talking, okay, you need 5 good bowlers. Nowadays people target you and wait for the situation, wait for a bowler, they pick a bowler and took advantage. And that's why Pakistan played smartly. Babar Azam's shot was a bit Not so smart. He could have take one and then give it to Shoaib, and then the confidence which now what's his name? Asif Ali. The guy. The guy. I mean, gave this team so much confidence that they can work around each other, build a partnership, and leave it some tail into Asif, and then he will finish it off. And there's still batting to come as well. Yes. I mean, that's the great thing about having a side with a long batting lineup and a man in that position. You know, guy number 7. You know, the guy number 7 there with the big shots just takes the pressure off. Right, Hassan Ali can. Well, Imad Waseem was there. Imad. So the only thing that's why, you know, all-rounders and genuine all-rounders and bowling all-rounders, because if you have more batting all-rounders, you'll have a very weak bowling attack. The indication is if you have bowling all-rounders who can bat, that's the strength of a team. I think, like you mentioned, you know, like after 10th over, you know, they bring back Rashid Khan. I think because I thought they miscalculate, because Mujib bowled 4 up front, you know, like 8 overs. He bowled 4 up front. So if you have a weak link, then you have to bring back your weaker bowler after 6 over and use them and keep 1 over for Mujib in the middle period. नहीं, इसमें क्या है, न्यू बॉल का सारा इशू होता है. 6 ओवर में आप गुलबदीन को करा सकते थे. यहाँ पे गुलबदीन और नवीन करते तो 3 ओवर या 4 ओवर ये कर सकते थे. पहला, तीसरा, 5वां, 7वां मुजीब ने किया. 11वां, 13वां, 15वां, 17वां राशिद खान ने किया. दोनों ने एक साथ बॉलिंग नहीं की. ये प्रेशर बिल्ड करके दोनों एक साथ आते तो क्लच कर सकते थे. 4 ओवर ये एक साथ करते
تو رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ میری سوچ ہے. تو شاید نبی کہیں نہ کہیں مس کیلکولیٹ کر گیا پاکستان کی, کیونکہ آخری 3 اوور لاسٹ 3 اوور کے اوپر 40 رن نہیں بچا سکتے. لاسٹ 3 اوور یہ نہیں بچا سکتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسپنرز کیونکہ تھے اور ایک طرف شارٹر باؤنڈری تھی تو وہ آصف کو پرابلم ہوتی ہے اسپنرز کے ساتھ, لیکن وہ ایک سائڈ سے کیونکہ چھوٹی باؤنڈری تھی اس وجہ سے دونوں کو اکٹھے نہیں لگایا, کیونکہ ایک اسپنر کو پھر چھوٹی باؤنڈری سے بال کرنا پڑتا. ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اینڈ کو رکھا تھا کہ ایک ہمارا مین بالر جو ہے وہ بال کرے گا, اسی لیے 8 اوور تک کرتے رہے. اس کے بعد 1 اوور کا گیپ آیا, 9 اوور کسی اور نے کیا, نوین نے کیا شاید. اس کے بعد 11 سے 17 اوور تک دیکھیں راشد خان آیا ہے. تو انہوں نے گیم کو اوپر لے کے گئے, آؤٹ کرنے کہیں نہیں گئے. یہ جتنا وہاں ڈیپ جائیں گے میچ میں پاکستان اسٹرانگ ہو جائے گا, اور پاکستان اسٹرانگ جب ہوگا تو آصف نیچے اور بھی بیٹنگ تھی, 1 اوور باقی رہ گیا. نو ڈاؤٹ 4 چھکے انہوں نے مارے, لیکن یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ ان کو ایک عاقب نے بھی بات کی تھی, اظہر نے بھی, کہ ان کو فاسٹ بالر چاہیے جو کہ لاسٹ اوورز کر سکے. یہاں پہ تھوڑا سا مس کیلکولیٹ ہوا ہے افغانستان سے. آئی تھنک اس میں یہی ہے نا کہ سم ٹائم وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی ہونا چاہیے. میرے خیال سے وہ پلان اے کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور اس ٹائم پہ جب اگر کیپٹن کو پتہ چلے کہ میرا جو مین بالر ہے مجیب, اس کو جو نا وہ لوگ آرام سے اس کے اوور سروائیو کر رہے اور اس کے اوور صرف ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو سمارٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ پلان بی کر رہے تھے. وہ انٹروڈیوس کر سکتے تھے راشد کو ارلی آن, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو 10 اوور کے بعد, اور راشد بھی کہہ رہے کہ میں اگر بال ڈیو بھی پڑ جائے تو میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. لیکن بینگ اے کیپٹن آپ کو سمارٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو پلان بی کے ساتھ بھی سم ٹائم آنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پلان اے کے ساتھ آئے اور آپ اسی کو کنٹینیو کرو. میرے خیال سے پلان بی آپ کا ہونا چاہیے. اسی لیے جو سمارٹ کیپٹن ہوتے ہیں وہ چینجز بھی اسی حساب سے کرتے ہیں میچ کے سچویشن سے. Rashid bhai had a point that because they don't have a genuine fast bowler who can bowl at depth, so they had to bowl Mujib at the top in the power play, and then Rashid and Mujib couldn't bowl together and couldn't have that kind of a bowling partnership that could really crunch and put pressure on and the save opposition. 1 over of Mujib in the middle or in the end. Always tough. Okay, if you just have a look at the points table then, there's pretty much, shall we say, 100% certainty that Pakistan will get through to the semi-finals. I can't see things going amiss against Scotland and Namibia. That would be a story. And I'd like to hear that discussed in the studio. I don't want that story. I don't want to hear that story. You're right, absolutely right. So they've done everything right so far. Obviously, it leaves the rest of the group. The other qualification place is up for grabs. India obviously want to get up there. New Zealand want to try. Afghanistan aren't out of it. But Pakistan, this is why we're all smiling, looking very nice. Pakistan safely through. What I want to ask you about is at the start of that game today, when the opening over, Shaheen Shah Afridi came in steaming in, it looked as though there was about 3 million gallons of adrenaline pumping through everyone. I mean, it was frenetic, almost too excitable. Yeah, he wasn't calm. He lost that calmness. His body was tired. He wanted to bowl at 180 kilometers. So he was a little bit all over the place. You need to control your emotions. Somebody should talk to him tonight. Okay, hello, when you're going into the ground, slow start, have energy, but in control. Because when you just imagine you're playing in the semis or maybe in the finals, you got to be calm and let your body move with the rhythm. So even though with Haris, he was trying too much. I mean, because now they wanted to bowl as fast as possible, but it's only 2-3 kilometers low and slow. But the area where you're hitting, the area is important and channel is important. You're 100% right. If you see the first over of Shaheen Shah Afridi and the last over, he was running slower. The first over, definitely against these guys, because what rivalry than India at the moment. Is it? Yes. Oh. I think I can see the hate Afghanistan also cancelled the tour. I mean, they were to tour Pakistan. آج بھائی میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو اس کے جو پاس میں جو ایک ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ جو 19 کے ورلڈ کپ میں تھا زازی کے ساتھ اور باقی جو افغانی جو پلیئرس تھے ان کے ساتھ. اس کا ریزن یہ ہے نا کہ یہ سارے جو نا رہتے ہیں ایک جگہ پہ پشاور میں,
اور جو اپنا شاہین ہے جہاں پہ رہتے ہیں لنڈی کوتل میں تو بالکل بارڈر کے ساتھ ہے تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ آپس میں جب ملتے ہوئے ان کی فیملی وغیرہ نا تو وہ کافی سارے پھر ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں تو ایک تو ہی ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرینس ان 2019 اور پلس یہ کہ وہ کافی وہاں پہ باتیں اکیڈمی میں ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو اس لیے اس نے ایکسٹرا پریکٹس اپنا ایفرٹ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ جو اس کا سوئنگ تھا اور زیادہ ایگریشن کے ساتھ وہ کر رہا تھا. He's 22. Most He will of the learn. teams we are playing, they have to play just more than a little bit more. He's 20. They have reason to That's play right, that's right. and reason to beat teams. But the point in the end is this: you need so much emotion and so much control, Yeah. which is exactly like this studio, isn't it? Yeah. If the emotion gets too high, things go slightly wrong. If the control is high, we're good. The control has been good. We're good. Okay. Now that we're good, let's take a break. We'll be right back with you for more.